Bismillahirrahmanirrahim. Our seventh unit is little by little one walks far. تھوڑا تھوڑا کر کے انسان دور تک چلا جاتا ہے. What do you understand by the topic from this picture? You can guess. There is stormy sky, barren land, and between the sky and the barren land there is a hope of greenery. The one little one walks for means that the slow and steady and with the consistent effort one can achieve success and become well all-rounded person in life. Do you think co-curricular activities may prepare students for the future? Yes, I think so. Co-curriculum activities help students to learn a variety of skills and thus prepare them for the future. What kind of co-curricular activities do you like? Why? It is an open-ended question. So, why do you like means it makes you a well-rounded student for the future. The first paragraph is too much important for the translation point of view, and sometimes the bump becomes into MCQs. So the last couple of years I have been a long bumpy ride for me. गुज़िश्ता चंद बरस मेरे लिए तवील कठिन सफ़र की मानिंद रहे. जैसा कि वो मेरी उम्र के हर फ़र्द के लिए होते हैं. तजर्बात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर हर एक को नौमरी में इस तरह के हालात में से गुज़रना पड़ता है जैसा कि मैं गुज़रा हूँ. वो सब उनमें से अपने तरीके से निपटे होंगे. इस खेल में हिस्सा लेने वाले एक फ़र्द की हैसियत से मैं कहूँगा मैंने पहला दर्जा हासिल कर लिया है. पहला दर्जा हासिल करने के लिए मेहनत की और उसे हासिल कर लिया. ये अशिया के बारे में सिर्फ मेरा तख्लीकी नुक्ता नज़र है. ये बुरा वक्त है, मगर हकीकत यह है कि हर कोई इस तरह से नहीं देखता जिस तरह से मैं देखता हूँ. मीन्स he is too much optimistic. couple of years का मतलब है 2 years से 2 years से. राइड का मतलब सवारी. बम्पी कठिन दुश्वार गुजार. टीनेज नौमरी ये आपका एडजेक्टिव है. बम्पी भी आपका एडजेक्टिव है. राइड आपका नाउन है. पार्टिसिपेंट शरीक-ए-कार. अर्न कमाया. क्रिएटिव उसका तख्लीकी. ऑप्टिमिस्टिक कि इस तरह के हालात में से गुजरने के उसे क्या फ़ायदा हासिल होगा. आपका फर्स्ट क्वेश्चन टू मच इम्पोर्टेंट है. अक्सर आता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ द ऑदर. तो ऑदर किस किस्म का पर्सन था. द ऑदर इज़ ambitious, hardworking and courageous student. Second paragraph. As a student, I am an active participant in academic and co-curricular activities. बहैसियत एक तालिब इल्म कि मैं निसाबी और मावन निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाला इंसान हूँ. हमेशा मेरी अवलिन तरजीह यही रही है कि स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करूं. अगर ये बात मेरे लिए अहम है, मैं ये भी जानता हूँ कि खेलों और बाद स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से महमपैलू तालिब इल्म बन जाऊँगा. हाई स्कूल में अपने तलीमी दुरानिया के गुज़िश्ता सालों के दौरान मैंने दर्जल शोबों में हिस्सा लिया और अवार्ड हासिल किए. स्काउटिंग में कायदे आज़म, ज़िलाई सतह पे कौन क्या है कि क्विज़ प्रोग्राम में फ़तह और 2011 में बैनुल अज़लाई तकरीरी मुकाबलों में और मज़मून नवीसी के मुकाबलों में शानदार तलीमी कारकर्दगी का अवार्ड. मेरे इन क्लबों में से भी ताल्लुक़ रहा है रीडिंग क्लब, सेकेंड ईयर बतौर सेक्रेटरी रीडिंग क्लब और कंप्यूटर क्लब. मैंने साल 2009 में दर्जन क्लासेस में अवार्ड हासिल किए. कंप्यूटर एप्लीकेशन, जोग्राफिया, एडवांस अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री. मेरी सबसे ज़्यादा हौसला अफजा स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला है. उस वक्त मेरा हाइकिंग और आउटडोर क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब से ताल्लुक़ है. इसके अलावा मैंने इस साल एक प्रोग्राम जो कि किसी दोस्त के साथ मिलकर पढ़ो कहलाता है में हिस्सा लिया. इस प्रोग्राम में मैं दीगर तलबा के ग्रुप के साथ किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात के तलबा को पढ़ा के सुनाने के लिए करीबी एलिमेंट्री स्कूल में गया.
آپ کا تھرڈ پیراگراف ٹو مچ امپورٹنٹ ہے. ان آرڈر ٹو گین این انڈرسٹینڈنگ آف ذمہ داری آزادی اور ذمہ داری کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 برسوں میں موسم گرما میں کئی کام کیے. میں نے مالی لحاظ سے اپنی مدد آپ کرنے کے لیے ایک بورڈنگ اسکول میں بھی کام کیا. موسم گرما کی تعطیلات میں نے پہلی ملازمت انگلش لینگویج سینٹر میں کی. میں نے دوسری ملازمت میک ڈونلڈ میں اور گزشتہ موسم سرما میں ڈی کے اکیڈمی میں کام کیا. کام کے ان تجربات کے لیے میں ان تمام اداروں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے ذہنی اور مالی لحاظ سے بہتر بنا دیا. یہ ایک لحاظ سے اس طرح سے اہم ہے کہ میں اب زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ہو گیا ہوں، جس سے مجھے مدد ملتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں بلکہ اس کا شدت سے منتظر ہوں. وہ ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے اب تیار ہو چکا. پیراگراف 4 بھی آپ کا ٹو مچ امپورٹنٹ ہے. آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی ہیو گاٹ اے ٹیسٹ آف واٹ دا ریئل ورلڈ ہیز ٹو آفر. میں خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کا تجربہ حاصل کر لیا جو حقیقی دنیا کے پاس پیش کرنے کے لیے موجود ہے. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول، بورڈنگ اسکول اور کام سے حاصل ہونے والے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اپنے کالج کے تجربات سے بہت مزید اسباق سیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں. اگرچہ یہ مشکل کام رہے گا مگر میں اب تک کامیاب رہا ہوں. میں آگے بڑھنے کے لیے اور آنے والے سالوں میں اپنے کالج کی تعلیم کے ساتھ اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح مثبت تخلیقی نقطۂ تخلیق پانے سے مجھے تحریک ملی ہے کہ مجھے کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. میں کسی بھی کوشش کو ترک نہیں کرنا چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ کیا what the motivated the author to participate so actively means he got the urge for success. میں جب حصہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتا ہوں. وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے.